Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Lila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Shila Guru Deva. Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Satasri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Iskcon Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupad Paramhansa Pariprajakacharya Stotra Satasri Srimad Bhaktivedanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivas Adi Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shamakunda Radha Kund Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samveta Bhaktivinoda Ki Jai. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. So I would like to request all the participants on Zoom, as far as possible, to put on your cameras. So महाराज कह रहे हैं कि Zoom पे जो participants हैं उनसे request है कि वो अपना कैमरा ऑन कर दें, कोशिश करें तो ऑन कर दें. So we can see your moon-like faces, and it will be more personal. Yes. तो महाराज जो है वो पर्सनली सबको देखना चाहते हैं और महाराज पहले भी बहुत कनेक्ट रहे हैं पाकिस्तान से. महाराज today the many centers from Pakistan has joined Swami Narayan temple. The devotees are standing there, and from their side they have joined Gaurnitai Bhavan, and even the new inauguration, new temple has been inaugurated in Balochistan, Pozdar. So their side also the devotees have joined today. And they made kirtana and they offered you kirtana before your arrival or joining this meeting. Wonderful, wonderful. Yeah. Excellent. So I will speak about the early history of Iskcon in Pakistan, and then we translate sentence by sentence. महाराज जो है वो हिस्ट्री इस्कॉन की पाकिस्तान के अंदर जो स्टैब्लिश हुई है वो बताएंगे उसके बारे में, और एक एक सेंटेंस जो भी महाराज बताएंगे तो उसको मैं ट्रांसलेट करती जाऊंगी. Hare Krishna, Shri Radha. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to your divine grace, all glories to the devotees. So nice to have your association. So, to begin, I will give a little background as to how the idea of going to Pakistan first came up. So महाराज पहले शुरुआत करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में वो आए और किस तरह से ये आइडिया हुआ कि पाकिस्तान में भी हरि नाम का प्रचार किया जाए. Srila Prabhupada had a disciple from Iran named Mars Attar, a senior partner in an international
accounting firm. शिला प्रभुपाद के एक कनेक्शन में थे जो कि बाद में उनके डिसाइपल बने थे. वो सीनियर अकाउंटेंट पोजीशन पे काम कर रहे थे. सॉरी महाराज, व्हाट वाज हिज नेम? मार्स आर्थर. Yeah. या सो वो बेसिकली जो है वो ईरान में रहते थे, तो वो शिला प्रभुपाद से कनेक्शन में थे. And Prabhupada initiated him as Atreya Rishi Das. शिला प्रभुपाद जी ने उनको इनिशिएट किया एज अत्रेय ऋषि दास. Atreya Rishi was a brilliant person in general, and particularly in finance. सो बेसिकली वो बहुत ब्रिलियंट थे, बहुत ज्यादा तेज थे हर चीज में, और खासतौर पे फाइन आर्ट्स के अंदर जो अत्रेय ऋषि थे जिनको उन्होंने इनिशिएट किया था शिला प्रभुपाद ने, वो ईरान से थे. तो वो बहुत ज्यादा निपुण थे और दक्ष थे, उनके अंदर दक्षता बहुत थी फाइन आर्ट्स वगैरह में. And Prabhupada encouraged him to return to Iran from America and तो begin प्रभुपाद ने उनको इनकरेज किया था कि वो जो है वो अमेरिका से ईरान आए और आगे जो है वो जर्नी प्रोसीड करें. and to begin Krishna consciousness there. और उनको कहा था कि वहां पर ईरान में जो है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को डेवलप करें, कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करें. So he did. सो अत्रेय ऋषि ने जो है वो किया इस तरह से, वहां पर कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार किया, डेवलप किया. In 1977, Atreya Rishi stopped in Karachi on his way to India for the Mayapur festival and spent a few days there. सो अत्रेय ऋषि जी ने जो है वो 1977 के अंदर स्टे किया था. उनका स्टॉप था कराची, क्योंकि उन्होंने मायापुर फेस्टिवल में इंडिया पे जाना था और वहां पर शामिल होना था. And from Karachi, he went to Bombay, met Srila Prabhupada in Juhu, and told him his ideas for Pakistan. और जब वो कराची से वहां गए थे तो वहां पर ये आइडिया इंडिया में शेयर किया था उन्होंने कि मुंबई जो है वो करीब ही है कराची से, पाकिस्तान से, तो यहाँ पर क्यों ना प्रचार किया जाए. He said that there were still many Hindus in Pakistan, and he thought that our first step should be to establish ourselves with them and get their support. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारे हिंदू रहते हैं, तो क्यों ना वहां पर जो है वो हरिनाम का प्रचार किया जाए और उनसे कुछ सपोर्ट ली जाए. After we were established with them, they, or we, with their help, could approach the Muslims. सो हो सकता है कि हम उनसे जब सपोर्ट ले लें जो हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में, तो आस्ते आस्ते फिर जो दूसरे मुस्लिम्स वगैरह हैं उनकी भी सपोर्ट हमें मिल सकती है. Srila Prabhupada said that the plan was very intelligent. शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि ये प्लान बहुत इंटेलिजेंट है, इट्स रियली गुड आइडिया. Atreya Rishi also mentioned that Amoga Lila Das had lived in Pakistan before he joined Iskcon, and that अत्रेय he... ऋषि, यस महाराज, प्लीज प्रोसीड. No, all right, so... ओके. When Atreya Rishi met Atreya Rishi also mentioned that Amoga Lila Das had lived in Pakistan before he joined Iskcon and that he spoke Urdu and would be the right person to go. तो अत्रेय ऋषि ये जानते थे कि जो अमोघ लीला प्रभु हैं वो ऑलरेडी वहां पर रहते हैं और वो उर्दू भी जानते हैं, समझते हैं, तो उनको अप्रोच किया जाए. Amoga Lila's father had been a missionary in the Methodist Church, and Amoga Lila had been born in Mussoorie, Dehradun, and had grown up and been educated there. तो बेसिकली जो है वो जो अमोघ लीला प्रभु हैं वो उनके फादर मेथोडिस्ट मिशनरी में जो है वो थे, और उनकी भी एजुकेशन उसी तरह से, वो स्वभाव और उसी प्रभाव से हुई थी, उसी तरह के वातावरण में हुई थी. And Amoga Lila was fluent in Hindi and Urdu.
अमोघ लीला प्रभु जो है वो हिंदी और उर्दू के अंदर बहुत वो थे, तेज थे, उनको आती थी, बहुत अच्छी आती थी उनको बोलने. And subsequently, when his father had been transferred to Karachi and became something like an archbishop there, Amoghulila had gone to the University of Karachi. So basically जब वो उनके फादर यहाँ आए थे पाकिस्तान में, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में उन्होंने एडमिशन लिया. अमोघ लीला प्रभु ने वहाँ स्टडी कर रहे थे. When Atreya Rishi met Srila Prabhupada in Juhu, Amoghulila was the vice president of the Juhu project. And although Srila Prabhupada encouraged Amoghulila to go to Pakistan, Gopal Krishna. There is a voice. Please mute your mic. It's a humble request. Some mics are unmuted by themselves, so I just would like to request that please, so the session could be proceeded smoothly. It's my humble request because echo was coming out. Okay, now it's settled. So Maharaja is saying that Amogh Leela Prabhu was in charge for project. Amoghulila was vice president of the Juhu project. Yeah, sorry. Amogh Leela Prabhu जो है वो vice president थे जुहू project के. And Srila Prabhupada encouraged Amoghulila to go to Pakistan. तो शिला प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप पाकिस्तान जाएं वहां पर. But Gopal Krishna Prabhu, now Maharaj, said that Amoghulila was a key man in Bombay and could not be spared. So गोपाल कृष्णा दास उस वक्त प्रभु थे, obviously अब महाराज हैं, तो महाराजा ने उनको जो है वो उन्होंने कहा कि इसको इनको इन्वॉल्व करना चाहिए इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के. Srila Prabhupada agreed that it was not good to start a new project while an old one suffered. तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये अच्छा नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम से नया कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लें, क्योंकि ऑलरेडी जुहू का प्रोजेक्ट चल रहा था, तो अच्छा आइडिया नहीं है ये, ताकि वो सफर ना करे. So the idea was there, but the time was not right. एक्चुअली आइडिया ये था कि टाइम वो सही नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है और दूसरा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की प्रीचिंग का डिजाइन हो रहा था, तो दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट. Then, a few years later, in 1980, the situation in Juhu changed and Amoghulila became freer. 1980 के अंदर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो गई, तो वो थोड़ा सा फ्री हो गए थे अमोघ लीला प्रभु अपनी जिम्मेदारियों से और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज से. So he went to Pakistan and got a wonderful reception. वो आए पाकिस्तान में, वहां उनको बहुत अच्छी रिसेप्शन मिली. The background of the Hindu community in Karachi is somewhat complex. जो बैकग्राउंड है यहाँ हिंदू कम्युनिटी का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है. Before the partition between India and Pakistan, relations between the Sindhi Muslims and the Sindhi Hindus were very congenial. तो बेसिकली जो है वो रिलेशनशिप बिफोर पार्टीशन सिंधी मुस्लिम और सिंधी हिंदू के कुछ बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, इट्स नॉर्मल उसमें थे. They had grown up together and were friends. तो वो अच्छे थे, लेकिन उनकी दोस्ताना जो है वो रवादारी और ब्रदरहुड जो है वो ज्यादा भाईचारा जो है वो कायम था, अच्छा था बहुत, काफी उनके जो रिलेशन से वो अच्छे थे, मतलब नॉर्मल थे. इट वाज नॉट वेरी वेरी कंजीनियल बट कंजीनियल थे. And the Sindhi Muslims did not want the Sindhi Hindus to leave. तो जो सिंधी मुस्लिम थे वो ये नहीं चाहते थे कि सिंधी हिंदू जो है वो छोड़ें और जाए वहां से, उस एरिया से या उस कंट्री से, इस कंट्री से. It was really the Muhajir, the Muslims who came from India during the partition, who were agitating that the Hindus should leave. So basically कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग थे जो कि वो चाहते थे कि वो लीव करें, अदरवाइज वो बहुत कंजीनियल रिलेशनशिप थे
between all the Hindus and Muslims, especially Sindhi speaking. As I recall, the Muhajirs, the Muslims who came from India, started the first Hindu-Muslim riot in Karachi. So basically वो इंडिया से जब वो आए थे तो उन्होंने पहला रायट जो कायम किया था वो कराची में कायम किया था. And people were killed and maimed. And then the exodus of Hindus from Pakistan began. So obviously कुछ इसमें controversies चली थी और बहुत सारे जो है वो different scenarios happenings हुई थी. तो उसकी वजह से जो है वो आगे पार्टीशन का आगे आइडिया जो है वो काफी ज्यादा जहनों में बैठ गया था कि इस तरह की चीजें जो है वो सही नहीं है. At that time, all the street sweepers in Karachi were Hindus. So the Muslims were thinking that if the sweepers all left, there wouldn't be anyone to sweep the streets. So basically उस वक्त जो हिंदू थे वो सफाइयाँ वगैरह करते थे सड़कों की और रोडों की. तो मुस्लिम्स को ये डर लगता था कि ये चले जाएंगे तो कौन सफाई करेगा और इनको नहीं छोड़ना चाहिए देश. So they approached the Hindus and requested them to stay, promising that they would give them protection. तो उन्होंने हिंदुओं से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर रहें और हम आपको प्रोटेक्शन सुरक्षा देंगे. There is a big colony there called the Bungi colony. Bungi तो Park. वहाँ पर एक बड़ी कॉलोनी थी बंगी कॉलोनी पाड़ा रहते थे वहाँ पर काफी हिंदू कम्युनिटी. In Karachi, in Narayanpur, which was कराची में a Hindu ghetto. हिंदू बेसिकली टाइप का उसके अंदर कम्युनिटी का जो है वो रहन सहन और वो सारा कुछ था. वहाँ पर हिंदू रहते थे बेसिकली और नारायणपुरा नाम था उसका जो है वो कराची के अंदर वो जगह थी. It was literally walled in for its residents' protection. तो यस वो उस तरह का एरिया था कि वहाँ जो भी लोग रहते थे हिंदू तो वो प्रोटेक्टेड थे और रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर सारे लोग जो है वो अच्छी तरह से रहते थे. It is part of a general area called Ranchor Line. और इसको बेसिकली रंचो लाइन भी कहा जाता है उस एरिया को. Which also had many Hindus of lower caste, mainly mochis or cobblers. तो उसमें बहुत सारे मोची वगैरह कॉबलर्स जो है वो लेबर और मजदूर और इस तरह के लोग ज्यादा रहते थे वहाँ पर. And that was where we found our best reception. और वहाँ पर जो है महाराज कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा वहाँ पर जो है वो रिस्पांस मिला. I will never forget the greeting I got when I first went to Narayanpur in late 1981. महाराज कभी भी वो भूल नहीं सकते हैं जब वो 1981 के आखिर के अशरे के अंदर वहां पर आए थे उस जगह पर. तो उनका जो वेलकम हुआ था स्वागत हुआ था that was amazing. Amoga Lila had already visited there, so they knew about Krishna consciousness from him. And अमोघ लीला प्रभु ऑलरेडी वहां विजिट कर चुके थे तो लोगों को पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में पता था. And somehow the news had spread that I had arrived. वहां पर ये न्यूज़ सूचना मिल गई थी काफी लोगों को कि महाराज वहां पधार हैं. Yes. Everyone in the whole colony came out. तो जितने भी कॉलोनी में लोग थे वो बाहर निकल के आ गए महाराज को स्वागत करने के लिए. It was the biggest reception I could imagine. और ये बहुत बेस्ट उनका स्वागत हुआ है. हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा उनको जो है वो वार्म वेलकम मिलेगा वहां पर. Even more heartfelt than the big turnout in Surat when Srila Prabhupada arrived there. इवन उससे भी ज्यादा जो है वो सूरत में जब श्रीला प्रभुपाद अराइव हुए थे तो वही घटना जो है वो महाराज को याद आती है. लेकिन उससे भी ज्यादा
They all came out. फील करते हैं कि it's They all came out and were banging with spoons on pans and making this tumultuous sound. सो बेसिकली जो भी घरों के अंदर कॉलोनी में लोग थे वो बाहर आए और चमचा और थाली लेके जो है वो बजाने लगे कि महाराज आए, उनका स्वागत हो, हरे कृष्णा महामंत्र जाप करने लगे. And the love, there was so much love coming from them. और जो प्रेम मिला था महाराज को वो बहुत ज्यादा, बहुत जो है वो बेपनाह था, वो जो उनका स्वागत था. They took me to their temple in the Bungi colony, and I sat down and spoke to them. वो महाराज को जो है वो टेंपल के अंदर वहीं जो था वहां पर लेकर गए महाराज को, वहां रूम वगैरह भी दिया महाराज को. We had kirtan, and it was a big love affair. Maharaj, your voice is yeah, your voice was not audible now. Could you please repeat? Could you please repeat, Maharaja? Because I think due to internet instability, I missed your point. Yeah. Okay. Yeah. So I was saying, there was so much love coming from those people in Narayanpur. तो महाराज कह रहे हैं कि जो नारायणपुरा में जो उनको स्वागत मिला वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था और बहुत ज्यादा प्रेम से भरपूर था. So again, they took me to their temple in the Bungi colony, and I sat down and spoke to them. तो महाराज वहां गए और वो वहां टेंपल था उसी नारायणपुरा कॉलोनी के अंदर, और वहां पर टेंपल में गए, महाराज बैठे वहां पर और वहां उन्होंने महाराज ने बात की. We had kirtan, and it was all a big love affair. तो वहां पर कीर्तन भी किया महाराज ने और जो है प्रेयर्स वगैरह भी की. For many months, I felt like Narayanpur was the most special place in Iskcon. तो बहुत अरसे तक, बहुत महीनों तक महाराज यही सोचते रहे कि नारायणपुरा जो है वो बहुत स्पेशल प्लेस है इस्कॉन के अंदर. Everyone, especially the young people, loved us. जो यंग लोग थे, जो युवा जो थे, यूथ थी जो वहां के, वो लोग बहुत महाराज से प्रभावित हुए और बहुत आकर्षित हुए महाराज से. The children had more free time and were always with us. जब चिल्ड्रन थे और जो बच्चे थे उनके पास ज्यादा टाइम होता था तो वो आ जाते थे, महाराज को ज्वाइन कर लेते थे. And they loved to chant. और उनको अच्छा लगता था कीर्तन करना और चैंट करना. There were also different communities within the colony. तो उस कम्युनिटी, वहां पर बहुत सारी कम्युनिटी भी थी उसी कॉलोनी के अंदर, डिफरेंट तरह की. Gujaratis, Punjabis, Marwadis. And they were कम्युनिटी के लोगों में गुजराती, and they were very cliquish. Yeah. They were very cliquish. So They wouldn't mix with each other. महाराज जो है वो कह रहे हैं कि वो गुजराती, मारवाड़ी और बहुत सारे लोग इस तरह के थे और वो इतने ज्यादा मिक्स नहीं होते थे एक दूसरे से, थोड़ा सा रूखे रूखे से रहते थे, अलग थलग रहते थे. But when we came and introduced Krishna consciousness, the barriers started to break down.
जब महाराज कह रहे हैं कि लेकिन जब हम उनसे मिले तो उसके बाद काफी चेंज आना शुरू हो गया। And everyone would come together and chant with us and hear Bhagavad Gita. तो सारे लोग आते थे, बैठते थे, चैंट करते थे और भगवत गीता जो है वो पढ़ते थे, सुनते थे, सॉरी। Then we discovered another community. फिर महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने एक और कम्युनिटी जो है वो इजाद की, एक और कम्युनिटी जो है वो उनको पता चली और उनको डिस्कवर किया। This was really a godsend. वो बेसिकली जो है वो ऑब्वियसली कृष्ण की कृपा थी और उन्हीं की कृपा से सारा कुछ हो रहा था ये। I can only imagine that it was Lord Chaitanya's special arrangement. तो मुझे हमेशा ये लगता है कि लॉर्ड चैतन्य की ही सारी मर्सी थी और अरेंजमेंट से और उनकी अनुकंपा थी कि सब कुछ हो रहा था। At the time of the partition, there was a district of Rajasthan called Tarparkar that got included in Pakistan, even though it was all Hindu. सो बेसिकली जब पार्टीशन हो रहा था तो उस वक्त राजस्थान की टेरिटरी के ऊपर कुछ फसाद था और कुछ कॉन्फ्लिक्ट था कि उसको जो है वो इस टेरिटरी में होना चाहिए कंट्री की, क्योंकि वहाँ हिंदू के सारे। There were no Muslims there, but by some fluke, it was included in उसमें Pakistan. कुछ जो है वो उसमें कुछ बहुत वो मुस्लिम नहीं थे, ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन कुछ इस तरह के कबीले और कुछ जो है वो झुंड था जो कि जो है वो इंक्लूड हो गया था वहाँ पर। And the residents were all Krishna bhaktas. So, pardon Maharaj, could you please repeat? All the residents of that Tarparkar district Okay. were Krishna bhaktas. जितने भी रेजिडेंट्स थे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट के वो सब भक्त थे भगवान के, कृष्णा के। अरे बताइए, अरे भरिए। I would like to request, please unmute. Sorry, please mute yourself because of disturbance. We are not able to see. Kishan Prabhu, please mute yourself and other participants who have incidentally unmuted. Mataji, you can mute all the participants. Okay, sure. Yeah, you can. Sorry. So there. Ask Baki Bihari, can we make you host? Sorry, because the host has left somehow. Mataji, can you make me co-host? I'll make sure. Who is? हरे कृष्णा माताजी, मुझे होस्ट बना दे, मैं हैंडल कर लूंगा। Okay, sure. So there was a small community of these Hindus from Tarparkar in Karachi who became very good friend of ours. वहाँ पर बेसिकली छोटी सी स्मॉल कम्युनिटी थी जो हिंदू थे और वो भक्त भी थे भगवान के। And there were a few Gujaratis, including the Karachi Hindu Panchayat chairman, Khubchand Bhatia. तो यहाँ पे कुछ जो है वो गुजराती हिंदू भी थे, जिसमें जो है वो खूबचंद भाटिया जी जो है वो हिंदू पंचायत के लीड पोजीशन पे थे, चेयरमैन थे। We met only two really prominent Sindhis because at the time of the partition, So almost all the ones who had assets left. तो हम जो है वो कुछ दो इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस वगैरह के जो हिंदू कम्युनिटी की थी उनसे मिले, क्योंकि बहुत सारे लोग तो पार्टीशन के वक्त जा चुके थे यहाँ से। One of the prominent Sindhis was P.K. Prem Shahani.
जो बहुत प्रोमिनेंट सिंधी था वो पीके शहानी साहब जो थे. Prem Shahani was our main advisor, and he was wise and experienced and trustworthy. हरे कृष्णा माता जी, शायद आवाज नहीं आ रही है. What's happening? We can't hear you, Maharaj. All right, should I repeat? Yes, Maharaj. Yeah, please. All right. So we had a friend named Haresh Gangwani, who was a Sindhi businessman. काफी हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे. And he had a Muslim friend named Zia, who was friendly to Hindus and was one of the leading lawyers in Karachi and connected with, और and he had a Muslim friend, Zia, who was friendly to Hindus and was one of the leading lawyers in Karachi and was connected with the government. तो उसमें ऑब्वियसली कुछ और भी लोग थे हिंदू कम्युनिटी के जो जियाउल हक ऑब्वियसली उस वक्त जो है वो मेन की पोजीशन थी पाकिस्तान के अंदर, तो वो उनसे भी कनेक्शन में थे. He liked vegetarian food and he would eat with Hindus. तो वो बेसिकली वेजिटेरियन फूड जो है वो शाकाहारी भोजन जो है वो बहुत लाइक करते थे काफी, और हिंदुओं से भी काफी उनका मेल जोल था और उनके लिए अरेंजमेंट्स भी करते थे. He was a nice, intelligent, liberal man, and we would visit him regularly. तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और ही वाज वेरी जेंटलमैन एंड उनको महाराज जो है वो विजिट करते रहते थे. But one day he said he had gotten a call or a few calls, including one from someone high up in the government. तो एक दिन उनको ना कोई कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो उनको कॉल आई है. Basically saying, why are you spending so much time with the Hare Krishnas? तो वो जो कॉल थी उसमें ये बात हुई कि वो हरि कृष्णा के साथ क्यों इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. He was very regretful, but he said, unfortunately, you will have to cut down on your visits and be more discreet. तो वो बहुत ज्यादा रिग्रेटफुल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये विजिट्स वगैरह को हमें जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा, जो मेल जोल है उसको कम करना पड़ेगा. But I knew that the Muslim intellectuals were interested because of the way our books sold in the bookstores. तो लेकिन महाराज कह रहे हैं कि मैं जानता था कि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो कि दूसरी कम्युनिटी से थे, वो बहुत इंटरेस्टेड थे और बुक स्टॉल से जो है वो बुक्स लेके पढ़ते भी थे.
We were not even sure if bookstores would accept the books because of the Islamic State, but most of them did. Nitya? What about the translation? Sorry, Maharaj, the internet was very unstable, so that's why I disconnected. Okay, Yeah. so I'll just repeat this part because it's very important. Yes, yes, sure. I knew the Muslim intellectuals were interested because of the Yes. way our books sold in the bookstores. महाराज ने पहले भी बताया था कि बुक स्टोर्स के अंदर बुक्स थी जो कि जिसमें बहुत इंटरेस्टेड थे बहुत सारे मुस्लिम से या दूसरी कम्युनिटी थी. We were not even sure if bookstores would accept the books because of the Islamic State, but most of them did. लेकिन ऑब्वियसली शुरू में जब आए थे वो ये नहीं हमको पता था कि वाकई में वहाँ पर इतनी एक्सेप्टेंस होगी और वो बुक सेलर्स या बुक स्टोर्स वाले लोग जो है वो रखेंगे बुक्स उसके अंदर क्योंकि मुस्लिम स्टेट है. We had whole sets of Srimad Bhagavatam and Sri Chaitanya Charitamrita, and they sold. तो हमारे पास होल सेट था भागवत श्रीमद् भागवतम का और चैतन्य चरितामृत बुक्स का और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा बिकने लग गया था बहुत सेलिंग हो रही थी उसकी. And we thought the customers were Muslims. और उसके ऑब्वियसली जो क्लाइंट थे कस्टमर्स थे वो मुस्लिम से. Because other than a few business people, most of the Hindus were poor and could not afford the sets of books. तो ऑब्वियसली बहुत सारे वहाँ पर जो है वो लोग थे वो ये सोच नहीं सकते थे कि इतनी ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट ली जाएगी या इतना ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाएगा दूसरे जो नॉन कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पर. Also, we were always meeting the Hindus and offering them the books. और महाराज बता रहे हैं कि वो जहाँ जब भी वहाँ हिंदू कम्युनिटी से मिलते थे उस टाइम में तो वो उनको हिंदू कम्युनिटी को ऑफर करते थे बुक्स. So if they wanted the books and could afford them, they probably would have gotten them from us. तो इवन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कहीं और से नहीं ले सकते थे या इवन अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो महाराज उनको जो है प्रोवाइड करते थे. So we knew there was interest among the Muslims, but it all had to be kept secret. सो महाराज बता रहे हैं कि यस बहुत से ऐसे लोग थे जिनके अंदर बहुत इंटरेस्ट था रुचि थी बुक्स पढ़ने की लेकिन वो इतना ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करते थे उसको. Shahani also told us, your main fear is not the government, it is the mullahs. शाहानी साहब जो है वो उन्होंने ये कहा था कि कोई फेयर जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट नहीं है लोग नहीं है यहाँ के और कुछ एक्सट्रीमिस्ट एंटिटीज हैं जो कि प्रॉब्लम करती है. We began during the presidency of Zia ul-Haq, and those were actually the golden days of Iskcon in Pakistan. तो बेसिकली गोल्डन डेज ऑफ इस्कॉन पाकिस्तान के बारे में महाराज बता रहे हैं कि उसमें जियाउल हक जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के उससे महाराज मिले और उनके साथ काफी कनेक्शन कायम हो गया था. He knew about us and tolerated us, and more than that,
maybe तो because we were Americans. तो वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे महाराज को, और महाराज समझते हैं कि शायद हो सकता है हम अमेरिकन थे तो इस वजह से शायद बहुत वेलकमिंग थे। I would fly from Bombay to Karachi and smuggle Prabhupada's books with me. And I would always hope and pray that I could get through customs. सो महाराज जो है जब भी वहां से आते थे पाकिस्तान आते थे तो वो बुक्स लेकर आते थे साथ में, और वो प्रार्थना करते थे, प्रेयर्स होती थी महाराज की, मैं आराम से बुक्स लेकर आ जाऊं। But once, when the officers made me open my bags and they saw all the books, they called me into the office. तो एक दफा जो है वो कस्टम्स के अंदर ऑब्वियसली वो उन्होंने ऑफिसर ने कहा कि बैग खोल के दिखाओ, और उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया बुक्स को। So while they were discussing what to do, one of them said something about President Zia. He knows about them and they're all right. And they just let me go with all my books. तो उस वक्त जब बात हुई तो ऑब्वियसली लोगों को जब पता चला कि प्रेसिडेंट जियाउल हक से हम कनेक्शन में, उनका नाम लिया तो उन्होंने कहा जाओ तुम, उन्होंने आने दिया फिर पाकिस्तान। One highlight was when Kubchan Bhatia invited President Zia to a dinner in his honor, sponsored by the Karachi Hindu Panchayat. तो खूबचंद भाटिया जी ने जो है वो एक पूरा अरेंजमेंट कोलैबोरेट किया था जियाउल हक प्रेसिडेंट के साथ वहां पर हिंदू पंचायत की तरफ से एक्चुअली डिनर जो है अरेंज किया गया था। He arranged it at one of the big hotels, and the menu was going to be all vegetarian. तो बिग बड़ा हाउस था, पैलेस टाइप का था, और वहां पर जो है वो वेजिटेरियन जो है वो वहां पर मेन्यू नहीं जो है वो प्लान किया गया था शुरू में। President Zia agreed to come, but the chief mullah of Karachi objected. बेसिकली प्रेसिडेंट जो थे जियाउल हक वो तो आ गए वहाँ, क्योंकि वो जो मेन्यू था, वो मेन्यू जो है पूरा वेजिटेरियन वहाँ लाइन किया गया था, क्योंकि हिंदू पंचायत उसको जो है वो अरेंज कर रही थी। लेकिन कुछ मुल्ला चीफ वगैरह कुछ थे ऐसे लोग जो कि उन्होंने उनको मना कर दिया कि नहीं जाओ आप वहाँ पर। Because if the president went, everyone would have to go. क्योंकि जब प्रेसिडेंट जाते हैं तो फिर सबको जाना ही पड़ता है इस तरह की सम्मेलन में। The governor, the inspector general of police, all the ministers from the Sindh cabinet, the state government, including the chief minister and him, the chief mullah, everyone. तो उसमें बेसिकली चीफ मुल्ला थे और उसमें गवर्नर से, कैबिनेट के ऑफिशियल्स से, सारे इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लोग जो थे वो उसमें आ रहे थे, और वो आने पे मजबूर हो गए, क्योंकि जब बिग जो है वो लीडरशिप पोजीशन आ रही है तो देन ऑफ कोर्स अदर्स हैव टू फॉलो। And the chief mullah was demanding that they serve meat. जो चीफ थे मुल्लास के, उन्होंने कहा कि भाई उनको जो है मीट वगैरह सर्व किया जाए। But Kubchan Bhatia said no. जो खूबचंद भाटिया जी थे उन्होंने कहा नहीं। So the mullahs threatened the president. If you go and they don't serve meat, we are not going. तो उन्होंने ये कह दिया था कि भाई अगर हम जो है वो जाएं और वहां पर हमें मीट नहीं सर्व होगा तो हम नहीं जाएंगे वहां पर। But the president went. लेकिन प्रेसिडेंट तो गए वहां पर, उन्होंने अरेंज जो की थी सारी अरेंजमेंट्स थी उसको जो है वो उन्होंने अवेल किया उस अपॉर्चुनिटी को। He was strong. He was very strong. वो बहुत ज्यादा तेज बहादुर थे और वो बहुत अपने डिसीजंस में फर्म थे। That was the thing. He was strong. सो बेसिकली वो बहुत ज्यादा पुख्ता और दृढ़ थे अपने डिसीजंस में। So the feast was vegetarian, but it was hotel food. सो जो खाना था वो ऑब्वियसली जो है वो वेजिटेरियन था, और feast was vegetarian and sorry Maharaj, it was? But it was from the hotel. Okay, but ये जो है होटल की तरफ से बना हुआ था।
And Kubchan Bhatia was strict. He would not eat hotel food. So his wife had cooked at home and brought a tiffin. बेसिकली गुपचंद भाटिया जो है वो नहीं खाते हैं होटल का, तो उन्होंने अपनी वाइफ को कहा कि वो कुछ बना कर लेकर आ जाए, घर से कुक करके लाए वो. President Zia was sitting next to him and enjoying the dinner. But when he noticed that Bhatia was eating something different, he asked, "What are you eating?" सो बेसिकली जो है वो उन्होंने तो प्रसाद जो घर का जो बना हुआ था वो खा रहे थे, तो प्रेसिडेंट जियाउल आ गए और उन्होंने पूछा कि तुम क्या खा रहे हो ये. Bhatia replied, "My wife cooked this." तो भाटिया जी ने कहा कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने ये बनाया है, घर से पकाया है ये. And President Zia said, "I want to try that." तो प्रेसिडेंट जियाउल ने कहा कि मैं भी ये ट्राई करना चाहता हूँ, And he really loved it. और उन्होंने खाया तो उनको बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा उनको. He said, "I want the two of you to come to Islamabad and teach us how to cook like this." और उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद वगैरह में ऐसे जो है वो खाने वगैरह मैं भी चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसे मिले मुझे, और वहाँ पर पकाए जाए और खाने को मिले. It was amazing. वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत अमेजिंग था. By then, most of the members of the panchayat were either practicing devotees or life members. जो बहुत सारे लोग थे हिंदू पंचायत के, वो लाइफ मेंबर थे, प्रैक्टिसिंग डिवोटी थे. They were all friends, and one was an initiated devotee. वो सारे फ्रेंड्स से दोस्त थे, और उसमें से जो है वो एक इनिशिएटेड डिवोटी भी था. Later, when things got bad, many of them came to India. जब चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई तो फिर वो जो है वो इंडिया से आए. But during Zia's time, there was law and order, and we had a lot of good devotees. तो जो जिया के टाइम के ऊपर, प्रेसिडेंट के टाइम के ऊपर जो है वो लॉ और ऑर्डर बहुत ज्यादा था उस वक्त एक्चुअली. So one of our devotees did an invocation with some Sanskrit prayers, and then Kubchan Bhatia gave Zia al-Haq a Bhagavad Gita. सो खूबचंद भाटिया जी ने जो है वो भगवत गीता जियाउल हक को दी थी. कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज किए थे इवेंट्स वगैरह उन्होंने. The press was there, and a weekly magazine comparable to the Illustrated Weekly of India snapped a picture of Bhatia giving the Gita to Zia, and they ran a whole item in the magazine. तो वीकली मैगजीन जो इंडिया से निकलता था उसके अंदर पूरी एक पिक्चर पब्लिश की गई थी, जिसमें जो है वो प्रेसिडेंट जियाउल हक को खूबचंद भाटिया जी जो है वो भगवत गीता दे रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं. That was unprecedented for the president to sit with Hindus and eat with them and then accept a Bhagavad Gita. और ये ऐसा पहले नहीं हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है वो उनसे भगवत गीता लें और उनके साथ बैठे और बात कर रहे हैं इस तरह की पर्सनालिटीज के साथ. Then Zia died in an air crash in उसके बाद एक हादसे के अंदर, हवाई हादसे के अंदर जो है वो एयर क्रैश में उनकी डेथ हो गई, जिया की, प्रेसिडेंट जिया की. There were elections and Benazir Bhutto became the prime minister, and things got worse, even though they should have gotten better. उसके बाद इलेक्शन हुए और ज्यादा जो है वो बुरे हालात होना शुरू हो गए, और प्रेसिडेंट वगैरह का जो सिस्टम था वो चेंज हो गया. काफी इसमें नई हुकूमत आई, बेनजीर भुट्टो जो है वो ऑब्वियसली नॉमिनेट हुई आगे. Our friend Prem Shahani became an advisor in the cabinet of the chief minister of Sindh. तो प्रेम शाहनी साहब जो है वो एडवाइजर बन गए, जो चीफ मिनिस्टर थे सिंध के, उसके एडवाइजर के तौर पे वो नॉमिनेट हुए. And Bhutto was liberal in her outlook. तो भुट्टो साहब तो बहुत ज्यादा जो है वो लिबरल थे, बहुत ज्यादा
खुले दिमाग के, आजाद पसंद, आजाद ख्याल के थे। एक्चुअली बेनजीर भुट्टो नहीं, बेसिकली भुट्टो साहब जो है वो नॉमिनेट हुए थे आगे, उन्होंने संभाली थी हुकूमत। But she was weak, and there was a breakdown in law and order. ओके, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है वो वीक थी उनकी हुकूमत बेनजीर भुट्टो की, तो इस वजह से लॉ और ऑर्डर वगैरह काफी ब्रेक भी हुए उस वक्त। So even though she was liberal and her rule should have been better for the Hindus, actually it was worse, because with the breakdown in law and order, the fanatic Muslims were free to do whatever they wanted. सो लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन जब होने लगे उनकी बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में, तो ऑब्वियसली कुछ भी करना शुरू हो गए, जो भी एक्सट्रीमिस्ट दिमाग के जो लोग थे उन्होंने कुछ भी करना शुरू कर दिया। फिर A few of our friends were assassinated, and many of our best supporters fled to India. तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत इसमें नुकसान भी हुआ और डेंजर में फंस गए थे, और बहुत से लोग चले भी गए दूसरे कंट्री में। But some, including Gangwani and Kubchan Bhatia, stayed. लेकिन कुछ जैसे कि खूबचंद भाटिया वगैरह जी थे, वो यहाँ पर रहे, यहाँ पर पाकिस्तान में। There were also a few professors in Pakistan who helped us translate Srila Prabhupada's books. यहाँ पे बहुत सारे और भी प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी की बुक्स की ट्रांसलेशन में हेल्प की थी। One of our good friends from the Tarparkar district who settled in Karachi was Professor Mohan Lal Chaudhry. तो एक प्रोफेसर मोहन लाल चौधरी जो है वो थरपाकर से कराची में सेटल डाउन हो गए थे, तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया था इसमें ट्रांसलेशंस वगैरह में। We would go to his home, and Amoga Lila would read the Sindhi translation, and then Professor Chaudhry would say in English what he thought Amoga Lila had read. तो बेसिकली वो उनके घर जाते थे, तो वो सिंधी में अबू लीला प्रभु ट्रांसलेट करते थे और वो इंग्लिश में बताते थे प्रोफेसर। इस तरह से वो बैठ के पढ़ते थे और समझते थे भगवत गीता को, भागवतम को। In that way, Amoga Lila would see if the Sindhi was really conveying what Srila Prabhupada meant. सो बेसिकली उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया अमोघ लीला प्रभु ने कि सिंधी जो है वो एक बहुत अच्छा मीडियम है, माध्यम बन सकता है आगे मैसेज पहुंचाने का लोगों के लिए। It was Krishna. Everything that happened there, the high ये people, सब कृष्णा की ही बदौलत हुआ है, सब कुछ कृष्णा की कृपा से हुआ है, हम नहीं कर सकते थे कुछ भी। we couldn't have done it on our own. हम अपने आप से कुछ भी नहीं ओन नहीं कर सकते थे कोई भी चीज, ये सब कृष्णा ने किया। There was a famous ghazal singer, the most famous in Pakistan, named तो Ghulam Farid. एक बहुत फेमस जो है वो गजल सिंगर थे गुलाम फरीद, पाकिस्तान के अंदर जो गजलें जो है वो गाते थे, गायक थे। He was based in Lahore, but he would come to Karachi to perform. तो बेसिकली वो लाहौर में बेस थे, लेकिन कराची में आते थे वो परफॉर्म करने के लिए। So one day, just see how Krishna arranged things. One day, Farid came into a Sufi temple in Karachi, and Amoga Lila happened to be there. तो एक दिन उन्होंने जो है वो अरेंज किया, जो है वो अमोघ लीला प्रभु को भी जो है वो बुलाया वहां पर, सूफी गजल मौसीकी का प्रोग्राम उन्होंने अरेंज किया था। Sufis are more open. सूफी ज्यादा खुले दिमाग के, आजाद ख्याल होते हैं। So Amoga Lila was there playing on a mridanga, and Farid asked, "Are you a musician?" तो अमोघ लीला प्रभु जो है वो उन्होंने मृदंगा बजाया था, और दूसरे भी और म्यूजिशियंस वगैरह जो है वो उनके साथ वो सम्मेलन में भाग ले रहे थे। No, Amoga Lila replied, "I'm not really a musician." हाँ, लेकिन उन्होंने उनको ये कहा गया था कि एक्चुअली वो भाग ले, लेकिन उन्होंने कहा मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ। I am a devotee of Krishna, but we play music as part of our worship. तो उन्होंने कहा कि मैं म्यूजिक भी अगर बजाऊंगा तो कृष्णा की ही सेवा के तौर पे बजाऊंगा और उसमें भाग लूंगा, अदरवाइज जो है वो
ऐसे ही मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ। One night, not during that visit, but another time, Farid came down from Lahore and performed at some rich man's house in Karachi. तो एक दिन जो है वो लाहौर से वापस जब हम आ रहे थे कराची, तो वहां पर इस तरह का कोई जो है वो सम्मेलन सेशन वगैरह इस तरह का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। The rich people there really flaunted their wealth. तो वहां पर बहुत ज्यादा जो रिच लोग थे, अमीर लोग थे, वो उड़ाते थे और उसको बहुत ज्यादा, उनको इस चीज पे गुरूर और मान भी बहुत था, बहुत पैसा है और उसको उसी तरह से यूज करते थे वो। So he had a big mansion and a huge garden. सो यहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा गार्डन के अंदर जो है वो पूरा मेला लगाया और एक पूरा ऑर्गेनाइज किया। Karachi can really get hot. So to avoid the heat, the concert was from 9 p.m. to 5 a.m. सो कराची का जो मौसम है दैट इज वेरी हॉट, बहुत गर्म रहता है, तो वो उसका टाइम उन्होंने चेंज कर दिया, अदर दिन दोपहर में करने के उन्होंने फिर कोई और टाइम उसका सेलेक्ट किया। which was quite common. और वो ऑब्वियसली बहुत यहाँ पर होता ही है, इतना ज्यादा टेम्परेचर अप हो जाता है। Because it was so hot, people slept during the day and stayed up in the night. तो बहुत ज्यादा जो है वो लोग ऑब्वियसली रात तक तो रुक सकते हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं एक्टिविटीज वगैरह, लेकिन दिन में बड़ा मुश्किल होता है कराची के या पाकिस्तान के टेम्परेचर्स जो हाई होते हैं। So 4 or 5 of us devotees went, and all these modern aristocratic Muslims, the women not in burqas but in silk saris and jewelry, were present. तो महाराज कह रहे हैं कि मैं और अमोलीला प्रभु वगैरह वहां पर गए उस सम्मेलन में, और वहां पर जो विमेन्स थी उन्होंने सिल्क साड़ीज और ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई थी, और काफी एडवांस माहौल था वहां पर। And Farid sang. पार्डन महाराज। And Farid sang. ओके, एंड वहां पर जो आए थे, बुलाया गया था लोगों, उन्होंने गाना शुरू कर दिया काफी। And while he performed, ladies would go up to him and throw money or give him jewelry. सो जो भी वहां पर गाना बजाना हो रहा था, तो अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह पे फीमेल्स जो है वो उनको अपनी ज्वेलरी वगैरह दे देती थी। At some stage, not that late, maybe 11 o'clock, he asked us to lead. तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है वो टाइम काफी हो गया था, 11 बजे थे, उन्होंने कहा कि अच्छा जी अब हमें जाना चाहिए और यहाँ से जाना चाहिए आपको। We felt shy, but he insisted, so we came up. सो हमें थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, काफी हम शाय फील कर रहे थे, लेकिन हम जो है वो ऊपर आ गए। I felt we should sing Jairada Madhava because I knew there was a sect of Muslims that were into Vrindavan. तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं वहाँ राधा माधवा जो है वो वहाँ पे सिंग करूँ उस स्टेज के ऊपर, उस महफिल के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसे सूफी वगैरह हैं जो कि वृंदावन वगैरह के जो गीत संगीत होते हैं और जो भजन वगैरह होते हैं उसको लाइक करते हैं, उससे कनेक्ट रहते हैं। And there had been a famous Muslim poet a few hundred years earlier, Shah Abdul Latif Bhittai, the poet laureate of Sindh. तो एक सिंध के बहुत बड़े शायर हैं शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, तो ऑब्वियसली उनको तो सब जानते ही हैं, उनकी काफी जो है वो गजल और उनके नगमे वगैरह गाए जाते हैं। And it appears from his writings that he had lived in Vrindavan. और उनकी जब हम राइटिंग्स पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि वो वृंदावन में रह चुके हैं। People say he was vegetarian and he wrote beautiful lyrical poetry about Vrindavan and Krishna's flute and the cows. तो लोग कहते हैं कि वो वेजिटेरियन थे और वो उन्होंने कृष्णा की पोइट्री वगैरह भी कनेक्शन में लिखी है। I had met one or two Muslims who knew about him,
And somehow they'd had some idea about Vrindavan and the flute and the cows. तो ऑब्वियसली कुछ मुस्लिम्स थे वहाँ पर ऐसे जो इन सब चीज़ों को समझते थे और जानते थे, वृंदावन, काउज, इन सब के बारे में उनको पता था, म्यूजिक। So we sang Jai Radha Madhava and translated it, and the people loved it. और महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने जब वो गाया तो उसको ट्रांसलेट किया तो वो बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रभावित हुए और बहुत अच्छा लगा लोगों को सुन के वहाँ पर। Some even came up and placed rupees at our feet. सो इवन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उस प्लेस से जो है वो डांस करना भी शुरू हो गए और ऊपर तक आ गए और नाचना शुरू हो गए, काफी एक्सटेसी में आ गए। So that was a highlight. सो ये हाईलाइट थी बेसिकली। But I think the biggest program came on one Diwali. तो बहुत बड़ा जो प्रोग्राम था वो दिवाली में हुआ था एक्चुअली। Things had changed. चीजें काफी चेंज हो गई थी। When we had first gotten to Pakistan, the Hindus were timid and fearful. जब हम पहली दफा आए थे पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत डरे हुए परेशान थे बहुत ज्यादा। They had no presence, no identity. कोई आइडेंटिटी नहीं थी उनकी, कोई उनकी शनाख्त नहीं थी अपनी। And we showed that you could be a Hindu and not be persecuted. और हमने उनको देखा कि वो हिंदूज जो है वो काफी अंडर माइलेज पोजीशन के अंदर थे, ऑब्वियसली नेग्लेक्टेड थे। Somehow, with the combination of us and Kupchan Bhatia in the Hindu Panchayat and all the devotees we had in the Panchayat, the Hindus became more open. सो यस, महाराज की वहाँ पर प्रेजेंस थी, खूबचंद भाटिया जी और जो हाई ऑफिशियल लोग थे गवर्नमेंट के, इन सब का जो कनेक्शन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन जो हो रहा था तो उससे काफी चेंज आना शुरू हो गया था। और हिंदुओं का जो बोलने का तरीका था, बात करने का तरीका था, या उनको अपने लिए कुछ समझ में आना शुरू हो गया कि हमारी भी कोई शनाख्त है इस देश के अंदर। So the Hindus decided to have a big Diwali program, and they rented a big theater in downtown Karachi and invited us to take part. तो हिंदुओं ने फिर बड़ा जो है वो इनिशिएट लिया और बहुत बड़ा दिवाली का फेस्टिवल जो है वो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया और महाराज को भी उन्होंने इनवाइट किया। The chief minister and many of the state cabinet members and different Muslim dignitaries attended. सो उसमें जो चीफ मिनिस्टर वगैरह थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, वो डिग्निटरी से वो भी आए थे उस प्रोग्राम में। It was a huge auditorium, and there were maybe 1,000 people. वो ह्यूज बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था और 1000 तक उसमें लोग आए हुए होंगे उस फंक्शन में। Many were Hindus, of course, but also a lot of Muslims. उसमें बहुत सारे हिंदू भी थे लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा मुस्लिम थे उस प्रोग्राम में। The organizers did not give us much time because it was a cultural event. क्योंकि वो कल्चरल इवेंट था तो हमें ज्यादा बोलने का तो मौका नहीं मिला। They had singers and dancers. तो उनके सिंगर्स और डांसर्स वगैरह आए हुए थे उसमें नृत्य करने के लिए और गाने के लिए। And we had only 10 to 20 minutes, so we had to really plan our part. तो हमने जो है वो 10 to 20 मिनट्स हमें मिला और हमने अपना पार्ट प्ले किया। I spoke briefly about the holy name. तो महाराज ने जो है वो होली नेम्स के बारे में, हरि नाम के नामों के बारे में जो है वो बताया। We did kirtan. कीर्तन किया। And then I asked the audience to join in responsively. फिर जो है वो हमने जो है वो ऑडियंस को भी इनवाइट किया कि वो भी आए और इसमें भाग लें। I had not been sure if I would do that or not, and I didn't know whether or not they would respond, but I just could not miss the opportunity. महाराज कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा होगा या नहीं होगा संभव, लेकिन मैंने जस्ट सोचा कि मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, आई जस्ट टेक अ चांस एंड आई इनवाइट ऑल टू कम एंड डांस, एंड वैसा कोशिश की मैंने करने की। So I began, Hare Krishna, and then they would chant Hare Krishna. And I would say, Hare Krishna, Hare Krishna.
And I got them to stand up. सो महाराज ने उनको कहा हरे कृष्णा, तो सामने से ऑडियंस ने भी कहा हरे कृष्णा, इसी तरह हरे कृष्णा, और सारे खड़े हो गए फिर इस तरह से. Even the big Muslims were participating. इवन जो बहुत बड़े नाम थे मुस्लिम्स के, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे थे उस डांसिंग और चैंटिंग में. It was unbelievable, overwhelming. ये बहुत ज्यादा जो है वो विचित्र था और बहुत सरप्राइजिंग था ये काफी मेरे लिए. Afterwards, I was in so much ecstasy, I could not sleep that night. और उसके बाद जो है वो मैं सो नहीं सका उस रात को. I will tell maybe one more story. महाराज एक और स्टोरी बताएंगे. There's a place between Sindh and Punjab called Multan. एक प्लेस है सिंध और पंजाब के बीच में, दैट इज मुल्तान. Srila Prabhupada wrote that some historians say that Hiranyakashipu's palace was in the city of Multan. तो श्रीला प्रभुपाद ने कहा, shall I continue, Maharaj? Srila Prabhupada wrote that some historians say that Hiranyakashipu's palace was in the city of Multan and that Prahlad Maharaj was born there. Kinchan Prabhu, your mic should be muted. Yeah, sorry Maharaj. Yeah. Maharaj ji was saying that there was a place between Punjab and Sindh, that is Multan. और श्रीला प्रभुपाद जी ने ये कहा कि हिरण्यकशिपु का बेसिकली वो जो है वो वहाँ पर सारी लीलाएं वगैरह जो है वो की गई है वहाँ पर, और प्रहलादपुरी के नाम से भी उनको जाना जाता है. Yes, Maharaj, please continue. So in Multan is a place called Prahladpur, where there are the remains of an old palace temple. तो मुल्तान की जो जगह है, मुल्तान को बेसिकली प्रहलादपुरी कहा जाता है. वहाँ पे ओल्ड पैलेस जहाँ पे वो टेंपल वगैरह नरसिम्हा भगवान का जो है वो है वहाँ पर. Once Amoga Lila led an expedition of devotees there, and as always, they did not know what to expect. So basically, obviously, जो अमोघ लीला प्रभु थे वो जानते थे सारी जगहों को, लेकिन बहुत सारे डिवोटीज तो नहीं जानते थे. तो वो वहाँ चाहते थे कि जाए और वहाँ पर भी कुछ ना कुछ जो है वो धर्म का प्रचार हो और लोग जाने समझे. That site was under government control. तो वो जो पूरी साइट थी वो गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हुई थी मुल्तान में. But although the caretaker hesitated, he let the devotees in and they did kirtan. ऑल्दो वहाँ पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी, लेकिन फिर भी डिवोटीज को उन्होंने जो है वो अंदर आने दिया और उनको कीर्तन करने दिया उस जगह पर. When they asked, "Why are you allowing us?" the caretaker said that the palace temple was a very special place. तो हमने पूछा कि आप हमें क्यों आने दे रहे हैं, तो जो टेंपल के वो ऑफिशियल थे, ओनर थे, उन्होंने कहा वहाँ पर जो उसकी रखवाली में जो थे उस टेंपल पैलेस के, तो उन्होंने कहा कि ये स्पेशल प्लेस है ऑब्वियसली, तो आप आए और यहाँ कीर्तन करें. In the past, the government had tried to dismantle the temple, but whenever anyone would try to break the stones or take away the bricks, there would be some calamity. So पहले भी गवर्नमेंट ने काफी दफा उसको इस तरह से नुकसान पहुंचाने की उस जगह पे कोशिश की है. तो वहाँ पे जब भी वो उसकी स्टोन्स या उसके पत्थर वगैरह या कुछ चीजों को उठा के लेकर जाते थे या कुछ वहाँ इस तरह की एक्टिविटीज करते थे, तो उससे क्या होता था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी वहाँ पर. The person would fall off a ladder and die, or a stone would fall on him and kill him. So इस तरह होता था कि वहाँ पर ऑब्वियसली पत्थर वगैरह से ही किसी की मृत्यु हो जाती थी, या कोई नागानी कोई आफत आ जाती थी, या कोई
अनप्रेडिक्टेड हैपनिंग हो जाती थी वहां पर। So after a while, they got the idea that there was a charm on the place and that they should rather leave it alone. तो महाराज ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा कि हाँ उस जगह पे कुछ ना कुछ ऐसा प्रभाव है, एक चार्म है वहां पर, तो उसको ऐसे हमें छोड़ना चाहिए उस जगह को। They knew that there was something special there, and the caretaker understood that we were somehow part of it. So he let the devotees in and they did kirtan. सो केयर टेकर्स को अंदाजा तो हो गया था हमारी सारी बातों से, जो उस टेंपल और उस पैलेस की जो है वो टेंपल पैलेस की रखवाली कर रहे थे, तो उन्होंने हम सब डिवोटीज को अंदर आने दिया और हमें कीर्तन करने दिया। It is there in Srila Prabhupada's purport to Sri Chaitanya Charitamrita, Untitled Lila, Chapter 9, Text 10. तो चैतन्य चरित्र अमृत की जो है वो अंतिम लीला के अंदर बताया गया है, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है अंतिम लीला 9:10। Quote, according to the opinion of some historians, Prahlad Maharaj was born in Treta Yuga in the city of Multan in the state of Punjab. उस परपट में ये बताया गया है कि जो हिस्टोरियंस है हमारे, उनकी ओपिनियन के हिसाब के मुताबिक प्रहलाद महाराज जो है वो त्रेता युग के अंदर सिटी मुल्तान के अंदर आए थे, प्रकट हुए थे पंजाब की स्टेट के अंदर। He was born of Hiranyakashipu. This is Prabhupada writing in Chaitanya Charitamrita. Prahlad was born of Hiranyakashipu, a king of the dynasty of Kashyapa. तो ये श्रीला प्रभुपाद के अल्फाज हैं और उसके परपट में चैतन्य चरित्र अमृत के जो वो है प्रहलाद महाराज जो है वो वहां पर बॉर्न हुए थे त्रेता युग के अंदर मुल्तान के अंदर, और he was also born of Hiranyakashipu and जो king of dynasty है कश्यपु, इसकी वजह से ही वहां पर जो है वो कश्यपुर के नाम से उसको कॉल किया जाता है, बताया जाता है कि कश्यपुर है वो वाली जगह, क्योंकि जो है वो वहां पर बेसिकली जो राजा थे किंग कश्यप मुनि कश्यप, तो वहां पर उनका जो है वो बॉर्न हुए थे वहां पर बेसिकली हिरण्यकशिपु। So Multan is also called Kashyapapur. Exactly. तो मुल्तान को इसी वजह से कश्यपपुर भी कहा जाता है। Preaching in Pakistan was one of the most enlivening and exhilarating experiences of my life. So पाकिस्तान में जो भी प्रचार की एक्टिविटीज थी, जो एक्सपीरियंस रहा है, वो जो अनुभव रहे हैं वो बहुत ज्यादा आनंदमय है और हमेशा से मेमोरेबल है। And Srila Prabhupada had said, anyone who preaches in the Muslim countries, I take the dust of his feet on my head. So श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो कोई भी मुस्लिम कंट्री के अंदर हरि नाम संकीर्तन का, हरे कृष्ण अमृत भावना का प्रचार करता है, मैं उसके चरणों की धूली लेता हूँ। So that is a brief history of the beginning of Krishna consciousness in Pakistan. तो ये बेसिकली महाराज ने बहुत ब्रीफ हिस्ट्री बताई है और इसी से ही जो है वो शुरुआत हुई थी पाकिस्तान में कृष्णा कॉन्शियसनेस की इनिशिएशन हुई थी, स्टार्ट हुआ था यहाँ पाकिस्तान की हिस्ट्री की जब हम बात करें इस्कॉन के हवाले से। So now if there's time, the participants can ask questions or make comments. Sure. महाराज सेइंग के पार्टिसिपेंट्स जो है वो अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, जो भी क्वेरी है, प्रश्न है, और कमेंट भी दे सकते हैं। सो द सेशन इज ओपन फॉर द क्वेरीज, कमेंट्स और क्वेश्चंस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु। सबसे पहले महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि महाराज मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जिस जगह का नाम महाराज ने नामकरण दिया था कीर्तानंद कॉलोनी। हाँ, आप प्लीज शेयर करें, फिर मैं आगे बात करता हूँ।
Maharaja, here is Shamakun Prabhuji is saying that I belong to a place, the name of that place has been given by Maharaja. That was Kirtanand colony. Okay. So he's reminding that colony name is given by His Holiness Giriraj Maharaj. Okay. Okay. तो महाराज से मैं महाराज और कीर्तानंद महाराज थे और अमोघ लीला प्रभु जी थे। वहां पर सुबह लगभग 10 बजे कीर्तन आरंभ हुआ था, तो उसके बाद लगभग शाम को 4 बजे तक कीर्तन, 5 बजे तक कीर्तन चला था। और बकायदा वहां से पत्थर, आसपास से पत्थर भी आ रहे थे एरिया से, क्योंकि मस्जिद वहां पर करीब भी पड़ती है। So he is just reminding that the name ceremony of that day, and there was actually Amogh Leela Prabhu there, Kirtanand Swami Maharaj there, and there were so many other devotees, and that was very exhilarating experience. Yeah. Good. Thank you, Prabhuji, for sharing such beautiful realizations of past times. Okay. Yeah, Okay. past times of Maharaja in Pakistan. Thank you very much. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Kanaiya Prabhuji, yes, please unmute yourself and you can ask question or query. Yeah. Hare Please Krishna. proceed. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. मतलब क्वेश्चन ये था, जैसे महाराज ने वहाँ पे पाकिस्तान में प्रचार बिगिनिंग की स्टार्ट में, वहाँ पे कुछ भी नहीं था पहले, तो इस वक्त यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, इसीलिए मैं इसी हवाले से पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे भी क्रिश्चियन कंट्री है, मतलब यहाँ पे हिंदू बहुत कम है, ना होने के बराबर ही है, तो प्रचार जो अगर करना है किसी को यहाँ पे, तो वो क्रिश्चियन में करना पड़ेगा, तो क्रिश्चियन को कैसे कृष्ण भावना में लाया जाए? Fantastic question. Maharaja Kanaiya Prabhuji, he has just currently shifted in South Africa. One of these states, there is, I think, Benin, I think. Is it Benin, Kanaiya Prabhu? Yes, it's Benin, Cotonou. Yeah. Sure. So he has shifted there, and he would like to request to know how to build a Krishna conscious community over there, because your experience is best practice for us as you started the journey here, and now it's full-fledged kingdom of Krishna consciousness, sort of. So he's saying that how I can build community over there, and there are literally negligible Hindu community. Mostly residing people are Christian, actually. So your enlightenment and guidance would be really appreciable. Okay. Where is he? South Africa, Benin city. West Africa, Cotonou. Oh, West sorry. Africa. Yeah. Okay. West Sorry. Africa. Sorry. Yeah, that makes more sense. Yeah. How far are you from Nigeria? 4 hours far from Nigeria. 2 hours? 4 hours, Maharaj. 4 hours. Yes. I went to Nigeria. I was the first Iskcon devotee to go there. And we do have many devotees in Nigeria. Yes, Maharaj. You know, I think our process, and even in Nigeria, we met many Christians and we made friends with them. In fact, one Christian minister, he invited me to speak to his congregation. Anuvad kar dijiye. Nitya, are you going to translate this, or we're not going to translate the questions and answers? Yeah, I'm translating. Yeah. तो महाराज कह रहे हैं कि नाइजीरिया के अंदर भी महाराज इज द फर्स्ट वन जिन्होंने प्रचार किया था, और वहाँ कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी हैं जिनके साथ प्रीचिंग कॉन्ग्रीगेशंस वगैरह डेवलप की थी उन्होंने। मतलब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है,
नाइजीरिया में Yes. इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, यहाँ पे फ्रेंच चलती है और मुझे फ्रेंच भी नहीं आती है। Okay. Maharaja, there is also a language barrier there. Like French is the most, I mean, preferred language over there, and English is really not that much received. So that's another issue. Oh. Yeah. Well, you have to find someone who knows English and French and get them to help you and translate for you. तो महाराज कह रहे हैं कि वहाँ कोई ना कोई ऐसा दोस्त बनाए जिसको इंग्लिश भी आती हो और फ्रेंच भी आती हो, तो वो फिर ऐसा है मेरे ट्रांसलेशन। पास, हाँ, अच्छा, लेकिन हाँ, very good. वो भी क्रिश्चियन है। वो भी क्रिश्चियन है, अच्छा। Maharaj, he is the such sort of person is there, but he is Christian, and maybe he is a staunch Christian. No. Well, he can be Christian, but he'll translate for you. He's a friend. He will translate for you. Yeah, yes. So Maharaj is saying that you can make requests, कि वो translate कर ले आपके लिए, and that way we can go forward. Maharaja, what are other steps for starting from the scratch level in any territory? Please Yeah. enlighten. We I mean, we did it in Nigeria. We did it in Sure. many places. Sure. Srila Prabhupada said, you just go to a park. Yeah. Well, we did Harinam Sankirtan in the cities. Yeah. But otherwise, Prabhupada said, you just go to a park Okay. and sit down and chant Hare Krishna. And then when people gather round and they ask, what is this crazy person doing? Then you tell them about Krishna and the Bhagavad Gita and the holy name. Yeah. Yes. Thank you very, very much, Maharaja. Very, I mean, it's very, sorry, कन्हैया प्रभु महाराज ये कह रहे हैं कि सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि पार्क के अंदर जाकर और एक दो जो भी आपके दोस्त हैं या इवन आप खुद जाके वहाँ कीर्तन करना शुरू करें, भगवद गीता पढ़ें, तो बहुत सारे लोग जो इधर उधर होंगे तो वो आना शुरू कर देंगे, इंटरेस्ट लेंगे, सुनेंगे, कोई ना कोई आके बैठेगा, पूछेगा, सवाल करेगा, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होगी। क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने यही स्ट्रैटेजी बहुत सारे कंट्रीज के अंदर यही किया था। जब यूएस से स्टार्ट किया था 26 स्ट्रीट, तो वहां एवेन्यू, तो वहां पर भी जो है वो इसी तरह से स्टार्ट हुआ था जर्नी। So that's a one way, and later we can learn more in further sessions ahead. Thank you very much for nice question. Any other question? Premchand Prabhu ji would like to ask any question. Yeah, Premchand Prabhu, please unmute yourself and ask. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Mataji. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. माताजी, Yes. महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभुपाद जी महाराज कभी पाकिस्तान आए थे? प्रभुपाद जी तो नहीं आए हैं पाकिस्तान में। प्रभुपाद जी कभी नहीं आए। यस, प्रभुपाद जी एक बार पाकिस्तान में आए हैं। आए हैं, अच्छा। लेकिन वो एयरपोर्ट से वापसी चले गए थे। अच्छा, ओके। महाराजा, देयर इज अ वन क्वेरी। हरे कृष्णा माताजी। या हरे कृष्णा। यस, महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम माताजी। माताजी, महाराज से पूछना चाहते हैं कि हम जो है प्रचार कार्य को और मस्जिद किस तरह बढ़ाए, महाराज में आशीर्वाद दे और महाराज में बताए। Sure. Thank you, Padmanabh Prabhu ji. Maharaja, there are two questions actually. Shall I continue? Yes. Yeah. One is there any occurrence of Prabhupada's arrival into Pakistan? Because they are saying, some of the devotees saying that he came to airport and he went back, but he did enter the actual territory of Pakistan. And the second question is how to expand preaching activities in Pakistan. The first question, I also heard that Srila Prabhupada was on a flight to Bombay, and that flight stopped in Karachi.
So it's true that he did land in Karachi. तो महाराज कह रहे हैं कि पहला सवाल बिल्कुल सही कहा आपने कि मुंबई से बॉम्बे से जो है कराची आए थे श्रीला प्रभुपाद, लेकिन वो वापस जो है वो चले गए थे एयरपोर्ट से। तो ये ट्रू है, ये सच है, ये सत्य है। और दूसरा सवाल जो है वो महाराज अभी जवाब देंगे जो पद्मानाभ प्रभु ने सवाल किया है। जी यस महाराजा, सेकंड क्वेश्चन। Well, of course, to preach to the Muslims, we need some special approach. मुस्लिम्स को टीच करने के लिए, प्रीच करने के लिए ऑब्वियसली हमें एक स्पेशल अप्रोच की जरूरत होती है। And as I mentioned, we put Srila Prabhupada's books, sets of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita and other books in bookstores where Muslims can buy them. पहली चीज जो महाराजा ने बताई है वो है कि बुक स्टोर्स वगैरह के अंदर श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत को रखवा दें तो लोग उसको पढ़ेंगे लेकर जो है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे विल बाय, दे विल रीड इट। या So it's very important that people can get Srila Prabhupada's books. Of course, So Hindus they will get, but I'm talking here about Muslims. So महाराजा is saying that ये बहुत विशेष बात होगी कि लोग उसको खरीदें, बुक्स को श्रील प्रभुपाद की, और उसको पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचे बुक्स। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी पढ़े, लेकिन जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो सब मैसेज को पढ़े श्रील प्रभुपाद के वाया बुक्स। थैंक यू माता। बोल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पद्मनाभ प्रभु पूछना चाह रहे हैं यहाँ जी, प्रभु पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को ज्यादातर पढ़ना नहीं आता है, तो हमें ही उन्हें मतलब करना होता है, तो लाइव तो हम खोल नहीं सकते हैं, तो फिर उसमें क्या करना होगा? ज्यादातर लोगों को पढ़ना नहीं आता तो उससे क्या होता है? पढ़ना नहीं आता, जैसे महाराज ने कहा कि आप चैतन्य चरितामृत लोगों को दे पढ़ने के लिए, तो लोगों को पढ़ना नहीं आता, तो फिर किस तरह कर सकेंगे प्रचार? हाँ Maharaja, there is a concern that most of the people are really not literate actually. So how to make them inclined towards reading of books? This is another concern. Oh, who is not literate? The devotees are devotees. Devotees and surrounding people and yeah. Well, if they can't read, we can have classes where we read from the books and speak, because they must hear the philosophy from Srila Prabhupada's books. So Maharaja is answering that philosophy पे वो सुनने हैं, श्रवण के ऊपर ज्यादा जो है वो फोकस कर रहे हैं। बुक्स जो नहीं पढ़ सकते तो उनको किसी तरह से डिस्कस करें, मैसेज दें। आप कहीं जा रही हैं, आपके रिश्तेदारों में, कनेक्शन में जो भी लोग हैं, तो आप 4 मैसेज जो है वो बता सकती हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस के ये 4 कोर मैसेजेस हैं। तो वाणी सेवा से ज्यादा आप फिर बताएं लोगों को। अगर आप बुक सेवा लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, बुक्स को रीड नहीं कर पा रहे हैं, इसी तरह प्रभु जी तो बहुत प्रचार करते हैं, आपकी पूरी फैमिली करती है, तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा बात करके लोगों से कनेक्शन एस्टैब्लिश करके जो है वो मैसेजेस पहुंचाएं कृष्णा कॉन्शियसनेस के। Then we have question from Mahesh Prabhu ji. I want to say one more thing. Mahesh Prabhu ji, please, yeah, put your question. Yeah. No, I want to say. Mahesh Prabhu ji. Yeah, sorry. Yes, Maharaj. Yeah, please continue. That if the devotees know Hindi, Srila Prabhupada did give a lot of classes in Hindi. Sure. Yeah. Maharaja is saying very important point कि जो लोग हिंदी जानते हैं तो वो हिंदी में लोगों को ज्यादा, उर्दू में जो है वो ज्यादा मैसेज कन्वे करें।
लोग इस तरह से जो है वो टीचिंग आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी. Mahesh Prabhu ji would like to say something, and then Subhadra Mata ji also want to say something. Yeah. Yes, Subhadra Mata ji. Hare Krishna. प्रणाम महाराज. और मेरा ये सवाल है कि हम यहाँ पर माला वगैरह भी करते हैं, भगवान की सेवा वगैरह भी करते हैं बहुत कर, लेकिन हमारे में कुछ चेंजेस इतनी नहीं आती हैं, क्यों? Thank you. बहुत धन्यवाद माता जी. Subhadra Mata ji is asking question that we are having association and we are chanting, but even we don't feel change in our life. I mean, not such drastic change which should have happened. So what is the reason? Well, I don't know what change she's expecting, but Srila Prabhupada did give one example. Okay. महाराज कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि किस तरह का आपको चेंज चाहिए लाइफ में, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने एक एग्जांपल दी है. He said that when you get on an airplane, you do all the same things that you did on the ground. जब आप एरोप्लेन में जाते हैं तो आप वही चीजें करते हैं जो कि आपने ग्राउंड पे की हुई होती है. You read, you talk with your friend, you eat. So basically आप उसमें खाते भी हैं, रीड भी करते हैं. प्लेन में आप लोगों ने सफर किया है तो उसमें आप हर चीज कर सकते हैं. And it seems like nothing has changed. तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता. जो आप जमीन पे कर सकते हैं वही प्लेन में बैठ के कर सकते हैं. But when you look out the window, you can see how far you have come from when you were on the ground. लेकिन जब आप विंडो से देखते हैं, खिड़की से देखते हैं उस प्लेन की, आपको लगता है कि आप बहुत दूर आ गए हैं धरती से, बहुत ऊपर आ गए, काफी दूर आ गए. So nothing dramatic may change, but if you look where you were before and where you are now, you'll see that there's a big difference. तो महाराजा कह रहे हैं कि sometimes क्या होता है कि कोई बहुत बड़ा जो है वो चेंज नहीं फील होता आपको, लेकिन ये जरूर फील होता है कि पहले आप कहाँ थे और अब आप कहाँ हो गए. तो वो जो आनंद, जो हैप्पीनेस जो आपको अभी मिल रही है, वो ऑब्वियसली पहले आपके पास नहीं थी. पहले आपके अंदर वो धैर्य जो है वो आनंद, शांति, वो चीजें नहीं थी, लेकिन अब है आपके पास वो चीजें. तो sometimes we really overlook things. Yes. Any other question? Thank you very much, Maharaj, for clarification. Ji, Moolchand Prabhu. Yeah, yes. Please go on. Hare Krishna. महाराज जी, हरे कृष्णा. माता जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम. श्री महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम. मेरा जो इसमें 2-3 क्वेश्चन है, काफी देर से वेट कर रहा था, मौका नहीं मिल रहा था. Maharaja, he would like to ask 2 to 3 questions. I hope you have time. I am just concerned. Yes. Okay. Thank you so much, Maharaja. Yes. जी माता जी, जैसे कि भगवत गीता में बताया गया है कि जीव जो है वो अनादिकाल के जरिए 3 गुणों के ज़ेरे असर जो है वो जालत में फंसता है. तो बेसिकली जो भी जो पैदा होता है वो तो इसी मतलब 3 गुणों के ज़ेरे असर होता है. और जो डिवोटी बनता है आगे चलकर, तो वो क्या पिछले जन्मों का कोई है इसमें कोई मतलब कोई बिजनेस या भगवान ने कृपा की है, बेसिकली भगवान ही कृपा जो है करता है, तो क्या पिछले जन्मों का कोई इसमें है क्या? और दूसरा ये कि व्हेन वी आर कम इन द कृष्णा कॉन्शियसनेस, आफ्टर दैट क्या भगवान हमारी फैमिली की रिस्पांसिबिलिटी उठा लेते हैं? जैसे कि Sorry. Yeah. Okay. One question. One at a time. Okay. One question at one time. Okay. Yeah. Maharaja is saying that one question. Okay. So we are taking your first question. Maharaja, he would like to request to know that
any jeev, whenever comes into this world, he or she is under influence of all the gunas, sattvic, rajasic, and tamogan, tamasic. So he's saying that when a person becomes devotee, so is this because of his prior karmas or special mercy of Lord? How that comes, how that shift happens? Because we all are under three gunas, prabhavs, or impact. Yes, our beloved previous Acharya, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, has discussed the question of how someone gets bhakti. So विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी महाराज जो है वो डिस्कस करते हैं कि कैसे भक्ति मिलती है किसी व्यक्ति को. And he says that one could propose that the cause is the mercy of Krishna. तो एक हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्ति मिली है हमें वो कृष्णा की मर्सी या कृपा से मिली है. But actually, the cause cannot be the mercy of Krishna. लेकिन जो कॉज है, जो रीजन है, वो कृष्णा की मर्सी नहीं हो सकती. Because Krishna is the father of all living entities. क्योंकि कृष्णा जो है वो बाप है, हम सबके पिता हैं, सारी लिविंग एंटिटीज के, जीव जंतुओं के. And he has to be equal to all of his children. तो ऑब्वियसली जो कृपा आएगी तो बाप तो अपने सारे बच्चों को एक ही जैसी कृपा और मर्सी देगा ना, तो सबको एक जैसी मिलनी चाहिए. So he cannot give bhakti to some and not to others. तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि वैसा नहीं होगा कि किसी को भक्ति मिल जाएगी, किसी को भक्ति नहीं मिलेगी. One thing, Nitya, you use the word obviously quite a bit. And it might be obvious to you, but it might not be obvious to others. So Sure. we can skip the obviously. Okay. You understand? Sure, I got. Yeah. Okay. So the cause cannot be the mercy of Krishna because Krishna has to be equal to all of his children. तो कॉज जो है वो बेसिकली मर्सी है, और मर्सी जो है वो सबको मिलेगी, जो भी बच्चे हैं बाप पिता के, इक्वली मिलेगी. So then the other possibility is the mercy of a devotee. तो एक और जो पॉसिबिलिटी है वो वैष्णवास की या डिवोटीज की मर्सी है. Yeah, kripa. कृपा. And someone could object, well, the devotee should also be equal to everyone. जो डिवोटीज हैं उनको सबको समान भाव से देखना चाहिए, तो सबके लिए इक्विवेलेंट होना चाहिए. But if we see the qualities of a madhyam bhakta, an intermediate devotee who is a preacher, we see that he does make distinctions. लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मध्यम अधिकारी है डिवोटीज, तो वो भेदभाव करते हैं, वो देखते हैं कि ऐसा है, वो वैसा है. And the Bhagavatam says, prema, maitri, kripa, upeksha. Prema, he gives his love to the Supreme Personality of Godhead. Maitri, he makes friendship with devotees. Kripa, he gives mercy to the innocent. And upeksha, he neglects the envious. Maharaj, sorry, 4 point after kripa. Yeah. Hare Krishna Mataji. Is prema, maitri, kripa, and 4th point is Upeksha, neglect. Okay. Yeah. Hare Krishna Mataji.
सॉरी, मुझे ये कंप्लीट करने दें। सो महाराजा का जो आंसर है वो बेसिकली मूलचंद प्रभु वो ये बता रहे हैं कि जो भक्त है उनकी मर्जी से हम भक्ति कर पाते हैं। जो वैष्णवों की, साधुओं की जो कृपा हमें मिलती है, तो जो भक्त वैष्णव होता है ना, वो प्रेम जो है वो भगवान से करता है, दूसरों को भी बांटता है। मैत्री यानी दोस्ताना सबसे व्यवहार रखता है। मैत्री वो सबका दोस्त होता है। कृपा इनोसेंस के लिए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और वो नेग्लेक्ट करता है बहुत सारी जो भी वो है, जिसे हम कहते हैं कि गलतियां हैं या फॉल्ट्स हैं या जो भी भेदभाव है या विकार है, उन सबको वो नेग्लेक्ट करता है। तो मर्सी बेसिकली जो है वो हमें भक्तों के द्वारा मिल रही होती है, जिसकी वजह से भक्ति करते हैं। Thank you very, very much, Maharaja, for So great I'm not clarity. finished. I'm not finished. Okay, sure. So the cause is the mercy of the devotee. So जो रीजन है वो भक्तों की मर्सी है, जो भक्तों के द्वारा हमें कृपा मिलती है। And when the devotee gives mercy, then Krishna gives mercy. तो जब डिवोटीज या साधु या भक्त जब मर्सी देते हैं, कृपा देते हैं, तो कृष्णा से भी हमें कृपा मिलती है। So Vishwanath Chakravarti Thakur says that because the Lord is Bhaktavatsala, he's partial to his devotees. तो बेसिकली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज कहते हैं कि भक्त वत्सला के तौर पे हम भगवान को जो है वो नाम से पुकारते हैं, तो वो भक्त वत्सल है और भक्तों की जो है वो महिमा का गान करते हैं, भक्तों की सुनते हैं। And Vishwanath Chakravarti Thakur says that Krishna's partiality toward his devotees is not a fault, dushanam, but it is an ornament, bhushanam. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज जो है वो कहते हैं कि जो भगवान है तो समान है, सबके लिए समान रहते हैं, लेकिन इस केस में भक्ति की प्रधानता या मर्सी की प्रधानता के देने के केस के अंदर इम्पार्शल रहते हैं भगवान। तो वो ऑब्वियसली भक्तों के द्वारा जो है वो मर्सी मिलती है, तो भगवान भी मर्सी देते हैं। So now he had other questions, but I think we should give someone else a chance and then we can go back to his questions. थैंक यू महाराज। मूलचंद प्रभु, हम कुछ और सवाल लेते हैं भक्तों के, और फिर आपके सवाल को हम देखेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं जो करना चाहते हैं सवाल। आई थिंक महेश प्रभु वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन और यस जगदीश दामोदर प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम महाराज। हरे कृष्णा प्रभु, मैं आपको दर्शन करवाना चाहता हूँ, कुंज बिहारी के दर्शन करवाना चाहता हूँ, श्री मेरी इच्छा है। कुंज बिहारी के, ये अल्टर में जा रहा हूँ, मैं अल्टर में जा रहा हूँ, दर्शन करवा रहा हूँ। ठीक है, आप बता दें महाराज। Maharaja, he would like to show you the darshan of Swami Narayan temple, where we have deity of CC Radha Kunj Bihari. Hare Krishna. Wow, beautiful. Wonderful. Jai. Yeah. I spent a lot of time at Swami Narayan temple. Yeah. Yes. Thank you. बहुत धन्यवाद जगदीश प्रभु जी। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है, किसी का और कोई सवाल है? खेमचंद प्रभु जी प्लीज, या खेमचंद प्रभु जी आप कृष्ण माता जी। पूछ सकते हैं महाराज से। यस यस, राम सभा प्रभु। यस हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। Thanks for the wonderful story of preaching in Pakistan. Maharaj, my question is, how many times are you visiting in Pakistan? Maharaja, he is asking that how many times almost you have visited. We really look forward to actually your next visit.
I can't count. I mean, I visited so many times. And I had, you know, in our programs with the Hindus, I would dress like this in sannyasi dress. But sometimes I would wear, what do they call it? Safari suit. I would wear a safari suit. महाराज तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, बहुत दफा उन्होंने ट्रेवल किया है और वो सफारी सूट में फिर वो ऑब्वियसली आते भी रहे हैं काफी दफा और इट्स अनकाउंटेबल एक्चुअली, ये गिन नहीं सकते लेकिन बहुत दफा आए हैं पाकिस्तान में, बहुत टाइम गुजारा महाराज ने. खेमचंद प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड या आप प्लीज कृपया अनम्यूट कीजिए और हरे कृष्णा माता धनुष प्रणाम. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा गुरु महाराज धनुष प्रणाम. हरे कृष्णा. आपके श्री चरणों में मेरा यही था कि प्रभु ने पूछ लिया कि प्रभु आ रहे हैं, प्रचार करें. अच्छा, आप अपने मंदिर के दर्शन करा सकते हैं महाराज को. गुरु महाराज दोबारा. आपकी आवाज नहीं आ रही सही, आपकी आवाज सही नहीं आ रही खेमचंद प्रभु जी. अब आ रही है. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. आ रही माता जी. हरे कृष्णा. Yes, we can hear you. Yes, Kimchan Prabhu. Yeah. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. Yes. हमारा से धनुष प्रणाम करते हैं पहली दफा, तो हम पूछेंगे, हम रामानुजा प्रभु से बात करते हैं यूके से. वो महाराज की बहुत प्रचार की बात करते हैं. वो पाकिस्तान में बहुत प्रचार महाराज ने किया है. दोबारा महाराज कब पाकिस्तान आ रहे हैं प्रचार के लिए? हमें अपना दर्शन भी दें और प्रचार के लिए आए, हमको आशीर्वाद दें. बहुत धन्यवाद. कृष्णा कांसे को और बढ़ाएं महाराज जी. धन्यवाद. Maharaj ji, again there is request for you. We really look forward to your arrival in Pakistan, and I mean that's a humble request from all of the Pakistani devotees. We have a special connection with you. That is, I mean that is requiring your presence as well. That would be boosting our morale, and we can recall again those pastimes and gain benefit out of your mercy and out of your compassionate kindness. Really, it's incredibly supported. We are very supported by you always. So any other question? Malati Mataji. Yes, Malati Mataji, you can unmute and आप unmute करें और सवाल पूछ सकती हैं. Yes. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. All glories to your divine grace. Actually, I have a comment, Maharaj. This is the first time I heard about Multan. Actually, Naval and the whole family, my husband, they are from Multan. Their native place is Multan. So hearing this was very nice. And earlier he used to feel that the Ishtadeva of his family is Durga Mata, but now he recently, just a month back, he told Narshingadev is our Ishtadev, you know. Yeah. So, Yes. So, and he has a special inclination, like he goes to Ahobilam Mutt all in Chembur. And so I am so happy to hear this. It's beautiful, Maharaj. Thank you so much. Wonderful. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much. Then Mahesh Prabhu, can you please unmute करके पूछ सकते हैं सवाल? Mahesh Prabhu. Yes, yes. Guru Maharaj. My question is that it is of a good disciple. Okay, very nice question. Thank you so much. Hare Krishna. Maharaja, please guide us how to become a good disciple. Srila Prabhupada said there are three categories of disciples.
श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा है कि 3 कैटेगरीज हैं डिसाइपल्स की, first class, second class, and third class. फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास. The third class, the Guru gives an instruction and the disciple says, yes, Guru Maharaj. And then 2 minutes later, he thinks, what did Guru Maharaj tell me to do? He forgot. पहली जो कैटेगरी है उसमें गुरु महाराज डिसाइपल से पूछते हैं कि ये तुम्हें करना है, तो डिसाइपल कहते हैं ओके यस गुरु महाराज, बट देन वो पूछते हैं कि आपने क्या कहा. Or he will do it, he'll do it very begrudgingly or reluctantly. तो बेसिकली वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होकर और बहुत ज्यादा हेजिटेंट होकर जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, इस तरह के डिसाइपल जो होते हैं. And the second class disciple will receive an instruction from the Guru and execute it perfectly. So second class जो डिसाइपल की है वो गुरु से जो इंस्ट्रक्शन मिलती है उसको फौरन से अबाइड करते हैं, उस कमांड को फॉलो करते हैं, उसको कंप्लाई करते हैं. And the first class disciple, he knows what the Guru wants, even without the Guru telling him or her, and he does it without being told. So जो पहली सबसे नंबर 1 कैटेगरी, नंबर 1 क्लास है वो उसमें डिसाइपल इवन गुरु नहीं भी बताता लेकिन वो पहले से ही करना शुरू कर देते हैं. गुरु के कहे बगैर ही वो जो है वो उनकी शिक्षाओं को धारण करते हैं और समझते हैं कि करना क्या है. So, yeah, of course, try to be first class disciple. So हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम फर्स्ट क्लास कैटेगरी के अंदर आ सकें. And in this regard, I would suggest studying Srila Prabhupada's books very seriously. So इस कनेक्शन में आप श्रीला प्रभुपादा की बुक्स जो है वो पढ़ना शुरू करें तो आपको काफी इसमें समझ में आएगा कि कैसे हमें जो है वो अबाइड करना है इंस्ट्रक्शन को. Thank you very much, Maharaja. Mahesh Prabhu has raised hand again. Yeah, Mahesh Prabhu, would you like to say something more? Mahesh Prabhu. Hare Krishna, Govind Prabhu ji. Yeah, Govind Prabhu ji would like to add something. हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम. महाराज से पूछिए कि महाराज की फेवरेट डिश कौन सी है, क्योंकि बहुत से भक्त मुझसे प्रश्न करते हैं जब व्यास पूजा होती है. तो जैसे भक्तिपाद महाराज की जो थी वो मुझसे पूछा गया तो बोला पिज्जा. Okay, very nice. He is asking Maharaj that which is your favorite dish. We would like to know because whenever comes Vyasa Puja, we want to prepare such dishes. Rasgulla. Okay. Rasgulla जो है वो महाराज की favorite dish है. Thank you for putting nice question, Govind Prabhuji. It will benefit all of us. And what is the next question? Any other question? Kanhaiya Prabhuji again would like to ask a question, Maharaj. He is living in West Africa, so he is having little association of devotees, and he needs more guidance maybe. So can we take his question again? Yes. Thank you, Maharaj. Yeah. Yes, Kanhaiya Prabhu, please proceed forward. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मतलब पूछना ये था कि जब कोई प्रचार करता है तो वो जो व्यक्ति होता है प्रचार करने वाला, मतलब वो खुद भी भक्ति में पूर्ण हो तभी उसका प्रचार असर करता है लोगों पे.
अगर वो खुद ही क्वालिफाइड नहीं है तो फिर वो प्रचार कैसे करेगा? Right, तो right. इसके Okay. बारे में कुछ Nice question. Maharaja, it's a very practical question, and sometimes I also think about it. That is like, what is the exact qualification of preaching? Because we really see ourselves insignificant, lowly, and incomplete and insufficient. There are so many shortcomings. So how to go forward in that direction? Well, as Srila Prabhupada said, we just repeat what we have heard from Krishna, from Srila Prabhupada. So महाराज कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद ने ये कहा है कि हमें सिर्फ रिपीट करना है जो मैसेज उन्होंने बुक्स में दिया है, आचार्य के द्वारा जो हमें मैसेज प्राप्त हुआ है उसको हमें रिपीट करना है, ये एक क्वालिफिकेशन है. We just deliver the message as it is. तो हम मैसेज जो भी है कृष्ण भावना का वो एज इट इज हूबहू डिटो हम जो है वो उसको ट्रांसफर करें. Srila Prabhupada gave the example of the postal peon, that the postal peon himself may be a poor man, but he can deliver you an envelope with $1 million in it, and you'll be very appreciative. So basically महाराजा is saying कि प्रभुपाद जी ने पोस्टमैन की एग्जांपल दी थी. तो पोस्टमैन की जो जॉब है वो है तो एक लिफाफा ट्रांसफर करने की, लेकिन ऑब्वियसली हो सकता है कि उसी एनवेलप के अंदर बहुत सारे $1 million भी हो. So yeah, you're delivering the message of Krishna, which is so valuable. It doesn't matter that personally you are poor, but your qualification is that you deliver it as it is. तो महाराजा ये कह रहे हैं कि पोस्टमैन जो है वो पुअर हो सकता है, गरीब हो सकता है, लेकिन उसके हाथ से जो लिफाफा जा रहा है उसके अंदर हो सकता है $1 million की वैल्यू हो और वो ट्रांसफर करता है पोस्ट ऑफिस को. तो और इसी तरह से वहां से घरों को पहुंचाता है या ऑफिसेस को पहुंचाता है. तो शिला प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि जो आपका मैसेज है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एज इट इज अगर मैसेज है तो वो उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, उसकी सिग्निफिकेंस उतनी ही रहेगी. And speak according to your realization. और अपनी रियलाइजेशन के कनेक्शन में या उसके हिसाब से हम जो है वो बात करें. Don't pretend to be more than you are. और उसमें हम अपने आप को उतना ज्यादा ना दिखाएं कि वो चीज हम में हो ही ना, वो चीज हम प्रिटेंड ना करें. थैंक यू वेरी वेरी मच महाराजा. Maharaja, please guide. I mean, are there any ritual necessary for being preacher? Like 16 mala is must. Okay, we are doing, but some other things like Mangla Aarti and other rituals, which are really sometimes skipped. So in that position, can we take lectures or sessions? Delivery of lecture would be, I mean, feasible for us. Can we move forward? Yes, if people ask you to speak, of course, the more you, like we say, practice what you preach. Yeah. So the more you practice, the better it is. But even if you don't practice everything perfectly, you can still preach. Okay. तो महाराज से मेरा सवाल ये था कि हम बहुत सारे रिचुअल्स समटाइम्स नहीं कर पाते हैं. हमारी जॉब ऐसी होती है कि हम जो है वो जाप कर रहे हैं लेकिन मंगला आरती नहीं कर पा रहे हैं या कुछ और इस तरह के रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं. तो क्या तब भी हम प्रीच कर सकते हैं, हम लेक्चर सेशन डिलीवर कर सकते हैं? तो महाराज कह रहे हैं कि कोशिश करें कि व्हाट यू प्रैक्टिस और व्हाट यू प्रीच यू प्रैक्टिस. तो जो भी हम प्रैक्टिस प्रीच कर रहे हैं वो हमारी प्रैक्टिस में हो. लेकिन यस, शिला प्रभुपाद ने ये कहा है कि इवन कुछ ऐसी चीजें आप रिचुअल्स नहीं भी कर पाते तो भी आप प्रीचिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, आप सेशन डिलीवर कर सकते हैं. So any other question
प्रेम चंद प्रभु जी 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 यस 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा यस भैया वल्लभ जी मेरा yes, क्वेश्चन ये, महाराज ने जैसे बताया कि कृष्ण तो भगवान है, सबके पिताजी हैं, तो उनकी कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन भक्ति हमें भक्तों की कृपा से मिलती है। और जिस तरह से भक्ति में उन्नति भक्तों की कृपा से होती है, उसी तरह से भक्तों के ऑफेंसेस करने से ही हमारा पतन हो रहा है। तो आजकल हम देखते हैं कि लोग भगवान की तो भक्ति करते हैं, जैसे डिवोटीज भी हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सारी रिचुअल्स करते हैं, आरती मंगल आरती सब ऑफर्स करते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर जो है ना आपस में परस्पर प्रेम नहीं है और एक दूसरे के प्रति ऑफेंसेस होते हैं, एक दूसरे का आदर नहीं करते और उनके अंदर अवगुण ढूंढते हैं, उनके अंदर हमेशा एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो महाराज से एक प्रश्न ये है कि हम कैसे वैष्णव अपराध से बचें, हम कैसे, क्योंकि जब तक वैष्णव अपराध होते रहेंगे ना हम खुद अच्छे भक्त बन सकेंगे और ना ही दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकेंगे, क्योंकि दूसरे लोग भी तो यही कहेंगे भाई इस्कॉन के भक्त तो आपस में ही ठीक नहीं है या एक दूसरे के साथ है ना अपराध करते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते रहते हैं। तो हम कैसे इस अपराध से बच सकते हैं? Okay, thank you, Mataji. Maharaja, she would like to know how to prevent ourselves from apradas, especially offenses towards devotees, Vaishnavas, apradas, or related concerns. We should not Yeah. commit Vaishnava aparad. So महाराज कह रहे हैं कि obviously हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नहीं करें अपराध इस तरह के। Once Srila Prabhupada's disciple Buri Jan Das gave a seminar or a retreat on japa. तो बोरी जाना प्रभु जी जो है वो उस पे सेमिनार हरि नाम जापा रिट्रीट इसके ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज करते थे उस वक्त, एक दफा किया था उन्होंने। And he gave the students 2 homework assignments. तो उन्होंने स्टूडेंट्स को कहा होमवर्क करने के लिए कुछ असाइनमेंट्स दिए। One was to see how attentive they are when they chant, because that's the main thing, to be attentive when we chant japa. तो एक उन्होंने असाइनमेंट ये दिया कि वो ये देखें कि चैंटिंग करते वक्त जो है वो कितना वो अटेंटिवली करते हैं, कितना फोकस होके कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो कर रहे थे चैंटिंग उस वर्कशॉप के अंदर। And the other homework assignment was to see how they avoid criticizing devotees. और दूसरा जो असाइनमेंट था वो ये था कि कितना जो है वो डिवोटीज प्रिवेंट करते हैं अपने आप को, और सॉरी स्टूडेंट्स जो है वो कितना जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को। So the next day he asked the students how they did on their homework. So next day obviously उन्होंने इसके ऊपर फॉलो अप लेना शुरू किया, इन असाइनमेंट्स के ऊपर, होमवर्क्स के ऊपर। And one of the students said that she was intending not to criticize devotees, but that that it was in the environment. In other words, it was the people she was with were criticizing devotees. So she said she intended not to criticize devotees, but it was in the environment. तो एक स्टूडेंट ने कहा कि एक्चुअली वो एनवायरनमेंट में या सिस्टम के अंदर क्रिटिसिज्म था, डिवोटीज के अंदर नहीं था और कोई किसी को नहीं क्रिटिसाइज कर रहा था, बट सिस्टम वाज डेवलप्ड दैट वे। So Buri Jan Prabhu said, well, then in that case, you have 2 choices. तो बोरी जाना प्रभु जी ने कहा कि अब इसमें 2 चॉइसेस हैं आपके पास। One is you can change the environment. पहला ये है कि एनवायरनमेंट जो वातावरण है वो चेंज करें। And if you want to change the environment, good luck. Because the environment doesn't want to change. The environment wants to criticize.
So उन्होंने कहा कि गुड लक, एनवायरनमेंट तो जो है वो चेंज नहीं होना चाहता, वो तो क्रिटिसाइज जो है वो उसके ऊपर हो रहा है, उस एनवायरनमेंट के ऊपर. And the other choice is to leave that environment. पहली चीज तो ये थी कि सॉरी दूसरी चीज ये है कि उस एनवायरनमेंट को, वातावरण को छोड़ दें, वहां से चले जाएं. That is within our power to avoid the association of people who criticize devotees. तो ये भी एक तरीका है कि उन लोगों से ही हम दूर रहें कि जो कि डिवोटीज से जो है, डिवोटीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं. Or if they start to criticize devotees, somehow steer the conversation in a different direction. तो उसमें डिस्कशन जो था वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई उस कन्वर्सेशन की. Yeah, at all costs. And to hear blasphemy of a devotee is also an offense, not just to blaspheme, but also to hear blasphemy is an offense. Pardon, Maharaj, I missed your last point. That it is an offense not only to blaspheme a devotee, but it's also an offense to hear blasphemy of a devotee. I think there is some voice actually. Maharaja, are you saying that there is not only focus should be on advancement of devotees, but to prevent criticism that way? No, I'm saying that it's an offense to speak bad about a devotee, but it's also an offense to hear bad things about a devotee. Okay, so obviously advancement की जब हम बात करें तो हमें अपने दुर्गुणों को देखना चाहिए और डिवोटीज के जो भी बैड या कोई फॉल्ट है या चीजें हैं उसको प्रिवेंट करनी चाहिए या उसे नेग्लेक्ट करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए. There is a book by Bhakti Vinod Thakur called Bhakti Loka. एक बुक है भक्ति विनोद महाराज ठाकुर महाराज की, भक्ति लोका. And in Bhakti Loka, he discusses these two verses from the Upadeshamrita, the Nectar of Instruction, 6 things that are favorable for the bhakti and 6 things that destroy bhakti. तो बेसिकली जो है वो भक्ति लोका के अंदर कुछ वर्सेस हैं जो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेश अमृत की कुछ हाइलाइट्स को बताती हैं कि कौन सी चीजें फेवरेबल है भक्ति के लिए और कौन सी फेवरेबल नहीं है भक्ति के लिए. And one of the things that destroys bhakti is prajalpa. तो एक इम्पोर्टेंट चीज जो कि भक्ति को डिस्ट्रॉय करती है, खत्म करती है, नाश करती है, वो है प्रजल्पा, बिला वजह की बात करना. And the worst kind of prajalpa is sadhu ninda. और जो बहुत ज्यादा वर्स्ट टाइप की जो प्रजल्पा है वो साधु की निंदा है. Really strongly makes the point that we should not speak negatively on others. तो वो भक्ति के लिए बहुत ज्यादा विनाश जो है वो कार्य है, विनाश दायिक है एक्चुअली. साधुओं की निंदा और उससे बचना चाहिए वरना वो भक्ति को डिस्ट्रॉय कर देती है. So I gave a talk on this subject in Alachua, and at this point one should not talk about others. महाराज ने अलचुआ के अंदर जो है वो इसका लेक्चर लिया था, इसके ऊपर पूरी टॉक ली थी. ऑब्वियसली यहाँ पर वो थोड़ा सा ब्रीफ बता रहे हैं. And one of the devotees quoted a saying that she learned from her father. वहां पे एक डिवोटी थी, उसने ये कहा था कि उसने अपने पिताजी से जो है वो सीखा काफी. And the saying is, there is so much good in the worst of us
And so much bad in the best of us. So उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी लर्निंग उन्होंने दी कि बहुत ज्यादा जो है वो बुराई है, बहुत ज्यादा हमारी अच्छाई के अंदर, और बहुत ज्यादा अच्छाई में भी हमारी बहुत ज्यादा बुराई है. It hardly behooves any of us to speak about the rest of us. तो बहुत सारे ऐसे हमारे दुर्गुण हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे विषय विकार हैं जो कि ऑब्वियसली हम उसको नहीं सोचते हैं, या ओवरलुक कर जाते हैं, या उसमें बात नहीं करते हैं. So yeah, we shouldn't speak bad of devotees, and we shouldn't hear bad about devotees. तो हमें डिवोटीज के बारे में बुरा सुनना भी नहीं चाहिए और बुरा बोलना भी नहीं चाहिए. दोनों चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए. Maharaja, I hope you are not tired, and we have taken lots of your time. I'm not tired, but if we're ready to end, then we can conclude with the Vaishnava pranams. Sure, Maharaj. Sure. Oh, but yeah. Excuse me, there is a question in the chat. Yeah. Okay. How to get the recording of tonight's meeting? Sure. I would be providing them, Maharaja. Yeah. Okay. Yeah, I would be providing. So, on behalf of all the devotees from Pakistan, I would like to take this opportunity to extend gratitude and special thanks to Maharaja for always supporting us, guiding us, nurturing us beyond boundaries, beyond any conditions. He's truly a sincere disciple of Srila Prabhupada, and his causes mercy is being always what we say. We are very, very thankful and grateful for his unparalleled support and kindness. So we would be हम सब मिलके हरे कृष्णा महामंत्र महाराज के लिए जाप करेंगे, एंड देन वैष्णव प्रणाम आखिर में जो है वो हम करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे. कृपा सिंधुर एवाच पतितनामे पावन्यो वैष्णव्यो नमो नमः. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. जय. Iskcon Pakistan ki jai. जय हो. Lila Prabhupada ki jai. जय हो. Lord Premanandi Hari Hari. हरि हरि बोल. Thank you very, very much, Maharaja. We look forward to welcome you. Karachi is always calling you. Hare Krishna. हरे कृष्णा. वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः. Thank you very much for all the devotees for joining from Globe and from Pakistan. Highly thankful. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. और कौन जाए चर्च में करिए. आवाज जा रही है. सवाल पूछ. माताजी हम एक सवाल पूछ सकते हैं? पूछें. बाद में आप मुझे भेज दीजिएगा सवाल, ठीक है? महाराज से पूछ लेंगे, हम उनको ईमेल कर देंगे. कि एकादशी वाले दिन अन्न में दोष बताया गया, तो बाकी दिनों में भी होता है या नहीं, सिर्फ एकादशी वाले दिन क्यों? बहुत अच्छा सवाल है. Maharaja, our kid is asking one question. If you allow, then I will email you. Maybe. Yes. I will email you. What is it? He is saying that in Ekadashi there is a dosha in grains. So in other days, why it is not there? I mean, there is no dosha in other days in grains, but particularly on Ekadashi, there is dosha.
Well, I never heard that, but definitely we should avoid grains on Ekadasi. That's for sure. महाराज कह रहे हैं कि हमें जरूर जो है ना ग्रेन्स को अवॉइड करना चाहिए, गंदम से बचना चाहिए। इसमें डिटेल्स हम आपको बाद में बताएंगे, भेज देंगे आपको। Yeah, when I first came to Pakistan, it was a very big problem on Ekadasi. We had no facility to cook, and nobody else was following Ekadasi. But we found one Gujarati Mataji, and she observed Ekadasi. So every Ekadasi would go to her small apartment and we would have Ekadasi. महाराजा कह रहे हैं कि जब वो यहाँ थे ना तो गुजरातीज वगैरह में एक ही गुजराती थे जो कि एकादशी ऑब्जर्व करते थे। बड़ा मुश्किल होता था एकादशी व्रत करना। आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ, ये रोइयो है ना, ऑनलाइन हो रहा है। All right. Yeah, thank you very, very much, Maharaja. Yes, Can't thank enough actually. Yeah. a pleasure, a pleasure. Thank you for organizing it and for translating. And please, I mean, pardon me for any mistakes I made, unintentionally or intentionally. I'm really begging your pardon. And seek your mercy. For the unintentional ones, did you make intentional ones too? I don't know. Okay, I don't think you did. Take care, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna.